Hello, hello, hello. I hope everyone's doing well. So just 2 weeks to go for CLAT now. Today is June 4th. CLAT is on June 19th. तो literally 15 दिन बचे हैं जी, 2 हफ्ते. तो आज I thought कि कोई ऐसा important कोई टॉपिक आया नहीं है जो इस हफ्ते न्यूज़ में रहा हो. So I thought, what we should do is we should rewind all the deep dives that we have had. क्योंकि if you remember, if you've attended deep dive sessions in the past, you know that we left those issues at the stage of adjudication that they were at that point in time. जैसे जब हमने जनवरी में Amazon CCI वाला डिस्प्यूट किया था. हाय अभिषेक, गुड इवनिंग. तो जब हमने जनवरी में किया था इशू ऑफ Amazon CCI 202 crore penalty, then at that point in time it was at a certain stage in its proceedings, right? वो NCLT में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वापस गया, right? All of those things were happening. So good evening, Ayushi, right? So what I thought is today let's just recap those things that we had done and also see कि क्या since the time that we have done those, have there been any updates? क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थोड़ी आगे पहुंची हैं? क्या कोई और नई ऐसी चीज हुई है जिसका इम्पैक्ट पड़े ऑन व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, या फिर कोई ऐसी नई चीज हुई है जो रेलेवेंट हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, राइट? तो दो पर्पस है इसके. एक कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, एंड सेकंड ये है कि इफ यू डू नॉट रिमेंबर दोस डिटेल्स, आई वुड वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि यू गो बैक टू दोस वीडियोस एंड वॉच. ठीक है? जब आप अगले 10-15 दिन में जब आप ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, just have that on in the background, because if you have those concepts clear, then it is very likely कि 3-4 passages जो हैं CLAT में वो इन्हीं टॉपिक्स में से उठ के हैं, because I mean as you know these are the most important legal topics that were in discussion in the past few months. Okay, so that's the idea of today's session, right? So let's start. पहला जो था 202 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी. हाय अभिषेक, यू हैवंट डन एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट 2-3 वीक्स. अरे विराट कोहली ने कितने टाइम से सेंचुरी नहीं मारी यार? क्या विराट कोहली को चिंतित होना चाहिए? तो विराट कोहली भी वरीड? नो, विराट कोहली इज विराट कोहली, राइट? तो इट्स ओके. अभी इतने टाइम से सेंचुरी नहीं मारी है, अभी सेंचुरी मार सकते. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, राइट? तो 2 weeks is a lot. It is 14 days यार. 14 days बहुत होते हैं. आपके बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, अगर ऑलरेडी खत्म नहीं हुआ है तो नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है? यू हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज पे जो अब तक आपने प्रिपरेशन किया उस पर विश्वास रखो. 2-3 हफ्ते आप, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बोर्ड एग्जाम्स वगैरह से बिजी थे, तो हैव फेथ इन योरसेल्फ. ठीक है? ये इस समय बहुत सारी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आती हैं दिमाग में यार कि ऐसे प्रिपेयर करनी मुश्किल हो रही है, आसान नहीं हो रहा है. तो चिल, हैव फेथ इन योरसेल्फ, थिंग्स विल वर्क आउट. ठीक है? बस ये 2 हफ्ते अपना लास्ट डिश एफर्ट बढ़िया लगाना. ठीक है? ऐसा मत करना कि गिव अप कर दो. हाय प्रणव, हाय. ठीक है, चलो. तो इफ यू रिमेम्बर, Amazon पे 202 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी कंपटीशन कमीशन ने, बिकॉज Amazon हैड purchased certain shares in future retail में indirectly Amazon ने कुछ shares परचेज किए थे. बट जब ये परचेज कर रहे थे, at that point in time Amazon did not disclose certain information to the Competition Commission of India which was required to be disclosed. तो इस चक्कर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल पोस्ट फैक्टो रेट्रोस्पेक्टिवली रिवोक भी कर लिया था एंड Amazon के ऊपर पेनल्टी भी लगा दी. ठीक है? तो अभी करंट स्टेटस क्या है भाई? करंट स्टेटस ये है कि तब से, अब ये जनवरी का मैटर था, तब से अब के आके 4 महीने या 5 महीने हो गए हैं. तो भाई अभी जजमेंट जो है मार्च में, इट वाज रिजर्व्ड इन द NCLAT, राइट? NCLAT जिसे कहते हैं. तो कंपनी लॉ या कंपटीशन लॉ में फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स एग्जिस्ट. ओके? कंपनी लॉ में देयर इज NCLT व्हिच इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, देन उसके ऊपर NCLAT, NCLAT. ठीक है? फिर NCLAT से अपील आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, हाई कोर्ट जा सकती है, यू कैन डिसाइड. ठीक है? नाउ इन कंपटीशन लॉ देयर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है NCLAT के ऊपर है फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप जहां जाना चाहो.
ठीक है, पहले एनक्लैट जो था ये एग्जिस्ट नहीं करता था भाई कंपटीशन कमीशन के केसेस में। उसके कंपटीशन कमीशन के ऊपर एक और ट्रिब्यूनल होता था जिसका नाम होता था कॉम्पैट, COMPAT। कॉम्पैट का फुल फॉर्म था कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अब क्या है, अपील कहाँ पे पेंडिंग है जी? अपील पेंडिंग है एनक्लैट में, जहाँ पे दे विल डिसाइड कि जो कंपटीशन कमीशन ने जो ऑर्डर के थ्रू पेनल्टी लगाई है और जो ट्रांजैक्शन को पहले अप्रूवल किया था उस अप्रूवल को रिवोक कर लिया है, क्या ये लीगल है या नहीं, इसकी जजमेंट कहाँ पेंडिंग है? एनक्लैट में। नाउ 5 महीने हो गए, राइट, अभी तक जजमेंट पेंडिंग। नाउ यू नो कि एक बार एनक्लैट की जजमेंट आएगी, डू यू थिंक एनक्लैट की जजमेंट के बाद मैटर सेटल हो जाएगा? डू यू थिंक एवरीवन विल गो होम लाइक ओके भाई एनक्लैट ने कह दिया है, अब हम सब घर जा रहे हैं, हमने मान लिया जो भी एनक्लैट ने कहा है, इसको बस ब्रह्म वाक्य हो गया है? यू थिंक मैटर खत्म हो जाएगा उसके बाद, या फिर पार्टीज विल डू समथिंग अबाउट दिस? अपील करेंगी पार्टीज, फिर मैटर और खिंचेगा, देखते हैं क्या होता है। तब तक आई मीन इफ यू बीन फॉलोइंग फाइनेंशियल न्यूज, तो फ्यूचर का, फ्यूचर ग्रुप का जो हाल है वो अच्छा नहीं चल, राइट? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह जुडिशियल मैटर्स में डिले या फिर उसकी स्लोनेस की वजह से फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। ओके, तो भाई हम कहाँ हैं इस समय? एनक्लैट में हम अटके हुए हैं अभी। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। वी विल सी। डेथ पेनल्टी, we had discussed the issue on death penalty, right? If you remember कि डेथ पेनल्टी के क्या क्या फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स में डेथ पेनल्टी दी जाती है, कब नहीं दी जाती। हमने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि भाई यू जस्ट वॉन्ट सी, आप सिर्फ ये मत देखोगे कि भाई क्राइम कितना हीनस, आप ये भी देखोगे द कोर्ट हैज मैंडेटेड द लोअर कोर्ट्स टू एग्जामिन वेदर और नॉट दिस पर्सन एज अ स्कोप ऑफ रिफॉर्मेशन, right? Do you remember कि it has to be rarest of rare case in terms of both the gravity of the crime as well as the reformability of the accused. Good evening Anjali, right? तो ये दोनों चीज में इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने बोला था ये देखनी है। अब आई टोल्ड यू कि जस्टिस यू ललित वाज गिविंग सर्टेन प्रो एबॉलिशन आर्गुमेंट्स, ठीक है? तो जस्टिस यू ललित की बेंच ने अभी रिसेंटली एक मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करने के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है? कि एक डेथ रो कॉन्विक्ट है, उनमें वहां पे मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर अलाउ कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि एक बंदा एक इन्वेस्टिगेटर होगा जो उस इनमेट का जो डेथ रो कॉन्विक्ट है उनके इंटरव्यू लेगा, विल फिगर आउट उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, विल फिगर आउट वेदर when he was in prison he has contributed to the prison, whether his conduct has been good, because all of this is important to realize whether or not this person, this death row convict, is capable of reformation, right? So the Supreme Court will now has now going to lay down guidelines कि भाई किस तरीके से we can get this information about mitigating circumstances. The Supreme Court is going to lay down guidelines. तो ये थोड़ा सा अपडेट आया है on death penalty. We are now moving towards a better, fairer application of the law that already exists. क्या law exist करता है already? You will look at the circumstances of the crime and you will look at the circumstances of the criminal. तो अब क्या है कि पहले तक ये था कि आप क्रिमिनल की सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान दे ही नहीं रहे थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि हम वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन वेयर द कोर्ट विल गिव गाइडलाइंस फॉर लुकिंग एट circumstances of the criminal. It won't be a simple, you know, this criminal is beyond scope of rehabilitation, beyond scope of reformation, खत्म, इसको डेथ पेनल्टी दो। तो ये हो सकता है मैकेनिकल एक्सरसाइज अब ना रहे, इट मे बिकम अ मोर इन्वॉल्व्ड intensive exercise, which is how it should be. What will be the duration of this deep dive session? I would think ki we would be able to finish our content in around 40-ish minutes, and I was thinking that for the last 20 or so minutes, we would discuss certain issues, if any, that you are facing in your CLAT preparation. So that was my plan. So 40-45 minutes में मैं अपनी तरफ से complete कर सकता हूँ, and then we can discuss जो आपको issues आ रहे हैं। ये मेरा आज का प्लान था, राइट? इंटरफेथ मैरिजेस, ठीक है? इंटरफेथ मैरिजेस हमने इशू डिस्कस किया था कि भाई लव जिहाद लॉज आ रहे हैं, राइट? जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन
legislations were coming in different states, that no one can induce someone to change their religion, and that inducement includes change of religion, conversion by marriage, change of religion by marriage. I hope you remember that भी इसको criminalize कर दिया था. सिर्फ criminalize ही नहीं कर दिया था, इसमें burden of proof भी reverse कर दिया था कि अगर एक मान लो एक मुस्लिम मैन ने एक हिंदू वुमन से शादी की, जिसके लिए हिंदू वुमन ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया विलिंगली, मान लो हाइपोथेटिकली हिंदू वुमन ने अपना रिलीजन चेंज करके इस्लाम कर लिया विलिंगली, तो इसमें it would be considered to be criminal until and unless this Muslim man is able to prove that her religion change was consensual, right? अभी इंटरफेथ मैरिजेस में लॉ चेंज नहीं हुआ है. जिन स्टेट्स में पहले भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेजिस्लेशंस लाए गए थे, उन स्टेट्स में अभी भी हैं. उन लेजिस्लेशंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे अभी कोई जजमेंट भी नहीं आया है, ठीक है. स्पेसिफिकली उन एज आई टोल्ड यू कि उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था. वो मैटर्स अभी भी पेंडिंग. ये फरवरी की बात है जी, हम इफ यू रिमेंबर करेक्टली दिस इज फ्रॉम फेब्रुअरी, राइट. आज हम जून में बैठे, अभी तक इस मैटर पे कोई हियरिंग कोई क्या कहते हैं आई थिंक हियरिंग ही नहीं हुई है, अगर डिसीजन तो दूर की बात, राइट. एंड I tried finding data on how many cases under these legislations have been registered in these months, but I could not find that data, which is also slightly troubling if you ask me, because we should be able to see कि भाई a legislation which is so constitutionally suspect, उस legislation के अंदर कितने लोगों को जेल डाला जा रहा है यार. क्या ये legislation misuse तो नहीं किया जा रहा? ये तो केवल तभी पता चलेगा जब डेटा है. अब unfortunately I could not find such data. तो अगर जब इवेंचुअली जब साल के एंड में एनसीआरबी अपना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इफ इट कम्स आउट विद अ रिपोर्ट, आई होप दे हैव एन एंट्री फॉर these interfaith marriage legislations, right? Abhi recently, I think today only, today or yesterday, there was a news that I was reading that there was an interfaith marriage that was going on in Agra, and members of a youth wing of a certain political party, they came and they crashed the people there, saying कि भाई इंटरफेथ मैरिज अब इलीगल है, क्रिमिनल है, तो आप कर ही नहीं सकते. बट लॉ भी ये नहीं कह रहा यार, लॉ भी ये नहीं कह रहा कि इंटरफेथ मैरिज इलीगल है. लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अगर मैरिज की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मैरिज की वजह से कन्वर्ट किया गया तो वो कन्वर्जन इलीगल है. मैरिज अभी भी इलीगल नहीं है, पर नहीं. अब that's what happens when the state declares a certain law to be criminal, a certain act to be criminal. That's what happens, उसकी social acceptability भी कम हो जाती है. So that's an issue. ठीक है. तो आई होप, लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट्स, दे हियर दीज मैटर्स एंड डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल ये वैलिड है या इनवैलिड है यार. एक तरफ तो डिसाइड. दैट्स इट. एंड देयर वाज द हिजाब कंट्रोवर्सी, राइट. इफ यू रिमेंबर, in Bangalore, a lot of women students were suspended from their schools because they were wearing hijabs, and the schools had come up with a uniform system कि भाई कोई हिजाब नहीं पहनेगा. तो इसको चैलेंज किया गया था कि भाई हिजाब हमारे रिलीजन का पार्ट है, ये हमारी फ्री स्पीच का पार्ट है. एंड कर्नाटका हाई कोर्ट हैड कम अप विद अ जजमेंट, और जजमेंट में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्वेश्चन क्या पूछा. कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि भाई क्या हिजाब पहनने से मना करना कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं. नो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन दैट द कर्नाटक हाई कोर्ट आस्क्ड. कर्नाटक हाई कोर्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या एक स्कूल अपनी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकता है, नहीं कर सकता? हो सकता है. किसी ने कोई डिनाई नहीं कर रहा भैया, किसी ने नहीं बोला कि एक स्कूल अपनी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता. क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक स्कूल ने येलो शर्ट की, मेरा येलो शर्ट पहनी हुई है, येलो शर्ट पहनने की यूनिफॉर्म बना दी, तो क्वेश्चन है कि क्या इसके ऊपर हिजाब डाल सकता है, नहीं डाल सकता? या ये तो आंसर करो. That was the question that was asked, and Karnataka High Court did not really ask that question. So you, by asking the wrong question, they gave the wrong answer, which they thought was the right answer, and therefore there came the judgment, right? So that was challenged before the Supreme Court. Supreme Court के सामने hearing भी नहीं हुई अभी, तो decision तो दूर की बात है, right? Recently, what has happened is कि I think a couple of days ago only, in Mangalore, some students were suspended for the same reason. So what I am really interested to see is if other states would bring similar legislations, right? That would be really interesting to see.
तो इसके अंदर if you remember, lot of issues were involved. Freedom of religion was involved, freedom of speech and expression was involved, freedom of personal liberty was involved. All of those issues were involved, and it is for that reason ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से इतने सारे टॉपिक्स लिंक हो सकते हैं कि वो दे कैन आस्क यू एनीथिंग. ठीक है, तो ये टॉपिक को थोड़ा सा आई थिंक अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा. आगे चलते हैं जी. देन देयर इज मैरिटल रेप एक्सेप्शन. ठीक है, सेक्शन 375 में, इफ यू रिमेंबर, देयर इज एन एक्सेप्शन कि इट इज नॉट रेप, a non-consensual sexual intercourse is not rape if it is done by a husband against his wife, right, provided the wife's age is above the age of 18 years. अगर एक नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो वो रेप नहीं कहलाए. अब ये मैटर था जी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस शक्दर एंड जस्टिस हरिशंकर वर हियरिंग दिस मैटर. अब दे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट. स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब क्या है? जस्टिस शक्दर ने बोला कि ये एक्सेप्शन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. जस्टिस हरिशंकर ने बोला कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल. तो they have given a certificate कि now you can go to the Supreme Court, you can file a appeal directly to the Supreme. ठीक है. At the same, मतलब अभी parallelly कर्नाटका हाई कोर्ट also did something interesting. कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्सप्रेसली नहीं बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. What the कर्नाटका हाई कोर्ट did was, कर्नाटका हाई कोर्ट के पास एक मैटर आया. उस मैटर आया सेशंस कोर्ट से उठ के. सेशंस कोर्ट is a most superior criminal court below a high court. So there is district court, sessions court, high court, supreme court in the criminal law system. Okay, तो हाई कोर्ट के जस्ट नीचे सेशंस कोर्ट होती है. सेशंस कोर्ट में एक चार्ज फ्रेम किया गया अगेंस्ट द हस्बैंड अंडर सेक्शन 375 and 376 फॉर रेपिंग हिज वाइफ. राइट. Now this was appealed, this formation of charge, this framing of charge was appealed before the Karnataka High Court. And the Karnataka High Court did not make a proper determination कि ये constitutional है या नहीं. Karnataka High Court just upheld that charge. उन्होंने बोला कि भाई ये चार्ज हम ट्रायल पे डिटरमिन करेंगे. ट्रायल मतलब सेशंस कोर्ट में जब ट्रायल जाएगा वहां पे डिटरमिन करेंगे कि ये ट्रायल मेड आउट है या फिर मेड आउट नहीं. पर आई एम नॉट क्वॉशिंग दिस चार्ज. मैं इस चार्ज को सिर्फ इसीलिए नहीं हटा रहा क्योंकि सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 के अंदर मैरिटल रेप नहीं कहलाता. So that's also something very interesting that happened कि Karnataka High Court, it seems, agrees with Justice Shakdar in the Delhi High Court. Appeals, as you know, are pending in the Supreme Court. ठीक है. If you want, make a list of all the very important legislations that are before the Supreme Court. और think about कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट रोज इनको क्यों नहीं सुन रहा है? थिंक अबाउट इट. मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देता हूँ, पर द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड है ना कि इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स, भाई कश्मीर का 370A का मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं सुना. क्यों नहीं सुना जी? कोई कारण? वी डोंट नो, राइट. And there is a right to protest. हमने डिस्कस किया था, which we discussed in the context of Article 19(1)(a, which was the right to freedom of speech and expression, right? And we had discussed in that session कि bulldozers were being used against people who are protesting. So what is happening right now in Uttar Pradesh, अभी I think 2 दिन पहले ही कानपुर में हुआ था कि some people who were protesting, उनको पकड़ तो लिया ही, बट उनके घरों के ऊपर द पुलिस सेड कि उनके घरों में बुलडोजर भी चला. अब दैट इज स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक. भाई आपने किसी को प्रोटेस्ट के लिए पकड़ लिया, ठीक है, सो you will initiate proper criminal legal action against them, you will charge them, वो एक criminal process follow होगी, that's great. ठीक है. if they are found guilty, they are found guilty also. पर running bulldozer over their properties, is that legal? Where is the legal justification? Where is the legal source of that power to run bulldozer over their house? That is an issue, and to my knowledge, there has been no judicial pronouncement on this issue yet, right? So, क्या without source of legal power can you run a bulldozer over someone's house merely because they were part of a protest? Unlikely. मतलब this is very unlikely conclusion होगा कि भाई this is legal. एक legal source exist करता है.
That's going to be difficult to argue. Okay. So then judicial appointments हमने discuss किया था. There was, if you remember, there was a deep dive on the governance part of the constitution, if you remember, right? So judicial appointments में one of the parts that we did was how are judges appointed to the Supreme Court and High Court. So very recently, two judges, Justice Pardiwala and Justice Dhulia, they were appointed to the Supreme Court. ठीक है. So now the Supreme Court's strength is back to 34. Supreme Court की sanctioned strength इस समय 34 judges है. Supreme Court is back to that strength. ठीक है. So you should know these names, हाँ, कि they have recently been appointed. तो ये जीके के perspective से and legal current affairs के perspective से काफी important बन जाते हैं. पर इस समय एक क्वेश्चन ये उठ रहा है इन द academia and in general society. The question that is coming up is कि if you remember the judicial appointment process, it is that the Supreme Court Collegium recommends certain names to the central government. The central government then decides whether or not to accept those suggestions. So when central government does not accept those suggestions, what happens? Can the Supreme Court, can those judges be appointed? No, they can't be appointed. So if they can't be appointed, then अगर मान लो एक person X है, उसका नाम recommend किया collegium ने on January 1st, 2022, मान लो, ठीक है, तब एक person X का नाम collegium ने recommend कर दिया. अब इसके ऊपर approval आया ही नहीं 3 साल तक. तो think about the seniority that this person would lose. मान लो 3 साल बाद उस इंसान को अप्रूव किया, then it would mean he would become a very junior judge compared to his brother and sister judges. He or she would be very junior, and his or her chance to become chief justice, that would be affected. His or her chance to stay on the bench at the higher courts in India, वो limited हो जाएगा. मतलब पहले वो मान लो 8 साल के लिए हो सकता है वो एलिजिबल होते, अब वो 5 साल के लिए एलिजिबल होंगे क्योंकि 3 साल डिले कर दिया. So this is another issue that is being asked कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को के अंदर एग्जीक्यूटिव का कितना रोल होना चाहिए, और अगर होता है तो वो रोल किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाना चाहिए. तो दैट्स एन इशू दैट इज करंटली बीइंग डिस्कस्ड. हो सकता है इसके ऊपर आपके पास पैसेज आ जाए, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ओके. देन डिफेक्शन. इफ यू रिमेंबर डिफेक्शन इज रिलेटेड टू समवन quitting their political party voluntarily, and जिसके कारण they are disqualified from being a member of either the parliament or their legislative assembly or legislative council. So recently you would know कि Kapil Sibal has resigned from the Congress, Indian National Congress, right? And parallelly what has also happened is in Rajasthan some BSP leaders, Bahujan Samajwadi Party, right, they have left BSP and have joined Congress. So now Mayawati and all, they have written a letter to the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly saying कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई करो, तो पार्टी चेंज कर ली है. तो यही तो था ना, क्या कहते हैं, डिफेक्शन का रूल कि भाई दल बदलना अलाउड नहीं है इस तरीके से. ठीक है. तो लेट्स सी हाउ द राजस्थान Legislative Assembly Speaker, how she decides. Then what Kapil Sibal interestingly has now said, Kapil Sibal has now very interestingly said कि I am going to challenge the validity of the 10th schedule, and it is the 10th schedule which has the anti-defection provisions. He says कि भाई ये जो anti-defection provisions हैं, ये क्या करते हैं? What they do is they prevent a person who is a member of a political party, they prevent that person from expressing views that are contrary to their party. Now you can understand where Kapil Sibal is coming from, right? Kapil Sibal is coming from a situation where he says, I had certain views that were different from the leadership of the Congress, but I was not able to express them in the parliament. Why? Because the anti-defection provisions say that I, as a member of Congress, am not allowed to go against the whip of the Congress. So he said this goes against the idea of representative democracy. That if I am elected by a certain constituency in India, right, it is my duty to represent their views and not just the views of one political party. So he is saying that on these grounds, I will try to challenge the validity of the 10th schedule. This will also be a very interesting thing to follow. I don't think anything is going to sort of fructify with respect to this in the coming few months. But I think in the time that you are going to be in law school, अगले 5 साल,
this might get decided, and this would be a watershed moment as far as Indian politics or Indian constitutional law is concerned. So it would be, जब आपके कॉलेज के दौरान कोई बढ़िया कूल जजमेंट है ना, तो बहुत मजा आता है, बिकॉज इफ यू आर एबल टू रीड देम, then you can take part in discussions, you can discuss them with your teachers. If you go to a good NLU, then they will call thought leaders in that topic. It is possible ki, so in our college in NLU Delhi, when the JS Verma, when the Nirbhaya case had happened, then one of our teachers was a part of the JS Verma committee. तो उस समय बहुत सारे डिबेट्स होते थे जो कॉलेज के अंदर teachers and experts they used to conduct, and we could just witness those debates, right? So if these things then happen at that point in time, right, when you are in college, and these debates happen, so you can be a part of those debates, which is very very exciting. Okay, so yeah, so you can imagine कि यार ये सारे issues अगले 4-5 साल में तो decide हो ही जाने चाहिए, उम्मीद करते हैं, right? तो अगर ये decide हो जाएंगे तो आप you will be in the thick of it. You will be if you are a dedicated law student, तो you would want to read those judgments. Of course, मेरी क्लास में भी 80 लोग थे, उनमें से 60 लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था in reading these judgments जो आ रही थी, 300 पेज की 400 पेज की लंबी लंबी जजमेंट्स आ रही थी, किसी को बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं था. बट आई होप कि आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी हो, एक थोड़ा पैशन हो, इंटरेस्ट हो in reading those judgments as and when they come out. Okay, hate speech was another issue that we had discussed. We had discussed several laws which prohibit hate speech and how hate speech is related with freedom of speech and expression. So recently, इसमें जो news में रहे हैं, which is who's the richest man in the world, it's Elon Musk. Elon Musk has been in the news for right or wrong reasons recently. Elon Musk said that I'm going to purchase Twitter, and I am going to have absolute free speech. I believe in absolute freedom of speech, and I will have it on Twitter, which is, I mean, even according to one of his own tweets, it does not make sense. Yeah, he says ki I will do only what is required by the law. I will only remove such speech that the law requires me to remove. Otherwise, all the other speech I will allow on Twitter. अभी कुछ different है क्या? अभी भी तो भाई लॉ ट्विटर यही कर रहा है कि जो स्पीच लॉ बोलता है हटा देता है, राइट? तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो अभी इट अपीयर्स राइट नाउ फ्रॉम अ कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव कि his bid to buy Twitter, it's about to fail. That's what it appears. But let's see, right? Another thing which is to be noted is in respect of hate speech. अभी हम थोड़ा डिटेल में बात देखते हैं कि sedition, जो offense of sedition है, section 124A of the Indian Penal Code, that has been stayed by the Supreme Court. कोई 124A पे स्टे लगता है तो क्या इसका मतलब है कि अब सारी hate speech allowed है? That's not what it means. There are still other sections. There are still other sections in the IPC and in other legislations which prohibit hate speech. सिर्फ section 124A पे stay लगा है, पर बाकी legislations अभी भी exist कर रहे हैं, बाकी laws अभी भी exist कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि अब hate speech allow हो गई है या फिर अब there is absolute freedom of speech, ऐसा नहीं है, right? So that's the situation with respect to hate speech. Then there was the criminal procedure identification bill. This session, if I remember correctly, was on April 9th. And on April 18th, the president gave his assent. So you know the process of a bill being passed, right? It has to go through both houses of parliament, and then the president has to give his assent. So on April 18th, the president gave his assent. This became an act, this became a legislation. And if you remember that session, then you would recall that one of the issues that we had identified with this bill was that this bill does not really have a lot of substance. It has said कि भाई a lot of the things will be delegated to the government to decide. Now, till yet, no delegated legislation has been made. ठीक है? The government also has not called for suggestions कि भाई उस delegated legislations में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. So I would very strongly recommend that you go back to this session. You have a look at कि क्या क्या चीजें डेलीगेट होनी बची हैं, एंड अगर कोई पैसेज अगर इसके ऊपर आता है तो यू शुड बी अवेयर कि भाई ये चीजें अभी तक डेलीगेट नहीं हुई हैं, ये चीज डेलीगेट हो चुकी हैं पर इनके ऊपर रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं.
Okay. So again, to my knowledge, this bill has not yet been challenged before the courts, and I'm quite sure that this will be challenged. But let's see how and when that happens. Okay. Then there was we did a session on prohibition on meat and alcohol and whether such prohibition is constitutionally valid or not. तो इसके ऊपर कोई ऐसा नया legislation तो नहीं आया, पर एक interesting update है. वो update ये है कि some parties have demanded कि जो ज्ञानवापी मॉस्क का एरिया, एंड वी विल कम टू ज्ञानवापी मॉस्क इन अ बिट, ज्ञानवापी मॉस्क के आसपास का जो एरिया भाई, उसे नो मीट एंड नो अल्कोहल जोन, अल्कोहल फ्री मीट फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, बिकॉज नाउ इट इज नाउ हिंदू टेम्पल. So let's see how that pans out. That's also going to be interesting. Ki how the Gyanvapi Mosque dispute is decided will have an impact on this. कि क्या उस एरिया में फिर मीट एंड अल्कोहल बेचा जा सकता है, नहीं बेचा सकता, इवन खाया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो डिपेंड करेगा कि ज्ञानवापी मॉस्क के डिस्प्यूट का क्या रिजल्ट आया. Then we did a session on demolition of buildings. जब जहांगीरपुरी में a lot of buildings were being demolished in Delhi, so we did a session on this. So Supreme Court ने, if you remember correctly, Supreme Court ने उस समय stay लगा दिया था on the demolition that was taking place in जहांगीरपुरी. I think a couple of weeks ago, and मतलब दो एक दो हफ्ते के difference के बाद demolitions started in Shaheen Bagh. Right? And if you recall, Shaheen Bagh is the place where the Anti-Citizenship Amendment Act uh, uh, protests were taking place. ठीक है, तो अब उन्होंने वहां पे डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वहां पे डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया, तो व्हाट हैपेंड इज कि CPIM, राइट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, राइट, दे अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट. दे अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि भैया डिमोलिशन रोक. सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो, हम रोकना चाहे भी ना तो हम नहीं रोकेंगे. क्यों? क्योंकि तुम लेके आए हो केस. लाइक, तुम कौन होते हो लेके आने वाले, राइट? अगर एक तो तुम्हें लाना ही था तो तुम जाके हाई कोर्ट जाते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या रहे हो भाई, आर यू पॉलिटिसाइजिंग दिस मैटर. एंड सेकंड, अरे तुम क्यों लेके आए हो यार, जिनका घर टूट रहा है, जिनकी एनक्रोचमेंट को डिमोलिश किया जा रहा है, लेट देम कम बिफोर द कोर्ट. व्हाई डज अ पॉलिटिकल पार्टी नीड टू कम बिफोर द कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी इस तरह की स्टांस भी ले लेता है भाई कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस तरीके में हम अलाउ नहीं करें. Okay, the Supreme Court takes that stance also. But let's see how this pans out. To my knowledge, they have approached the Delhi High Court. Delhi High Court has not yet done anything on it. But let's see how that pans out. Okay. Then there is sedition. We've discussed sedition कि सेक्शन 124A पे स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जब तक हम इस पे फर्दर ऑर्डर्स नहीं देते हैं, तब तक कोई भी सेडिशन के ऑफेंस के लिए अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए. जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अंडर द लॉ ऑफ सेडिशन, दोस प्रोसीडिंग्स शुड बी पॉज्ड जब तक ऑर्डर नहीं आता है. एंड द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड कि भाई we will internally discuss this matter and we will figure out whether or not we want to keep this offense of sedition or we want to change it. Do we want to remove it? Do we want to change it? जो भी है वो करना चाहे, they will decide. ठीक है, तो this process, let's see how long it takes. बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये आपके लॉ स्कूल के टाइम में ये भी डिसाइड हो जाएगा, राइट? सो योर लॉ स्कूल टाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग बिकॉज यू नो all of these very contested, very important issues are going to get decided in the time that you're going to be in law school. So that's going to be very fun for you. Then there is abortion का issue हमने डिस्कस किया था जब यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो गई थी. राइट, यू रिमेंबर, ड्राफ्ट ओपिनियन लीक हो गई थी जहां पे बोला था कि भाई एक रो वर्सेस वेड केस है, और रो वर्सेस वेड केस जिन्होंने अबॉर्शन अलाउ कर दिया था एज अ मैटर ऑफ फेडरल लॉ. एज अ मैटर ऑफ फेडरल लॉ अबॉर्शन वाज अलाउड. ठीक है, तो दैट केस इज बीइंग सॉट टू बी ओवररूल्ड. एंड वो लीक ड्राफ्ट तो लीक हो गया था, पर उसके बाद अभी तक प्रॉपर जजमेंट नहीं आई है. ये भी मोस्ट लाइकली तभी आएगी जब तो आई थिंक शायद 3-4 हफ्ते में भी आ जाए. But again, this might also come during your first year. This is also going to be very exciting, right? When we were in law school, I think उस time पे the gay marriage judgment had come from the US Supreme Court, Obergefell versus Hodges, right? And it was very exciting judgment, right? कि as a landmark change in law, gay marriage was allowed. So it is very likely that this judgment will come out during your law school. This is also going to be very exciting. Of course, Indian law में तो इसका कोई discussion चल ही नहीं रहा है.
There has been no change in Indian law since that date. So that's the law as far as abortion is concerned. Then there is Gyanvapi Mosque, which is जो हमने last week हमने discuss किया था, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कुछ issues चल रहे हैं. तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, if you remember, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट में. वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनने की आर्ग्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर 7 रूल 11. ऑर्डर 7 रूल 11 में ये था कि भाई क्या ये प्रोसीडिंग्स आर दे बार्ड बाय सम लॉ. एंड इफ यू रिमेंबर, देयर वाज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991. दैट एक्ट सेड कि भाई अगस्त 15 1947 के बाद एक रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो इफ दैट इज द केस, क्या ये प्रोसीडिंग्स यहाँ पे मस्जिद थी, क्या उसको मंदिर करार देने की प्रोसीडिंग्स, या फिर वहां पे हिंदुओं को राइट टू वर्शिप मांगने की प्रोसीडिंग्स, क्या वो प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल भी है, क्या वो प्रोसीडिंग्स लाई भी जा सकती है, नहीं लाई जा सकती. राइट. ये मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनना है. उसकी सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है. और अगली डेट कब है जी? जुलाई 4. जुलाई 4 को क्यों? क्योंकि जून इज यूजुअली और वेकेशन पीरियड. ठीक है. Interestingly, what has happened is that while this petition is pending, another suit has been filed. A fresh suit has been filed seeking an interim order. कि भाई जब तक ये आप सूट डिसाइड नहीं कर लेते ना, वो जो शिवलिंग आपने डिस्कवर किया है ऑन द साइट, at least let us go and pray on that shivling. Please let us go pray on near that shivling. अब एक प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रही है जो सिर्फ ये डिसाइड कर रही है कि ये केस हम सुन सकते भी हैं या नहीं सुन सकते. एक नई प्रोसीडिंग ऐड होगी. और लेट अस सी कि ये दो प्रोसीडिंग्स किस तरीके से आपस में इंटरैक्ट करती हैं. वी विल हैव टू सी. ठीक है. सो आई थिंक फ्रॉम माय एंड this is it as far as recap is concerned. I would very, very, very strongly urge you to go back and have a look at these videos so that you have a broad idea of the arguments that are being made, because I'm telling you, it's very, very likely that your passages will come from these areas of law. ठीक है. इन्हीं फंडामेंटल राइट से कुछ लिंक्ड आएगा, इन्हीं इश्यूज से लिंक्ड कोई पैसेज आ जाएगा. तो अगर आप इनसे वाकिफ होंगे तो आपके लिए वो पैसेज सॉल्व करना आसान होगा. यू विल सॉल्व देम फास्टर. ओके. सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आई एम हियर. एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस, तो हम आज के हफ्ते के लिए अलविदा कह सकते हैं. I'll wait for a bit if anyone has questions. कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Should I go through knowledge primer only after 7th? 7th को बोर्ड एग्जाम है. I'm presuming मैथ का. That's why the cutoff date of 7th. Yeah, sure. मतलब आज 4 तारीख है. If you want to spend 2-3 days on board exam, do it. पर उसके बाद फिर लग जाना यार लॉ के लिए. ठीक है. मतलब एंट्रेंस के लिए बिल्कुल फुल एफर्ट टुवर्ड्स एंट्रेंस. ओके, दैट्स ओके. पर उसके बाद देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. नथिंग. किसी की शादी है घर पे, किसी का हवन है, किसी का नामकरण है, भाई फर्क नहीं पड़ता. कुछ नहीं होता. फ्लैट एक ही बार आता है जिंदगी में. लोगों की शादियां, लेट्स होप कि उस इंसान की एक ही शादी हो. ज्यादा शादियां हो तो मतलब कुछ कलेश ना हो. पर ये सब होता रहता है यार. पर क्लैट एक ही बार आता है. तो वो सब इन 15-20 दिनों के लिए इग्नोर कर देना. राइट. तो so there's that. Okay. I also missed weddings leading up to entrance exams some 10 years ago now. और कोई प्रश्न? Okay, if there are no more questions, then what I am going to do is I am going to give a link of all those prior videos in either the description to this video or as a comment to this video,
so that all of them are very easily accessible for you. Okay, so that you don't have to go keep finding all of those links. I will leave those links in the description or as a comment, right? And if you have any questions and you are a Pratham student, you reach out to me through your regular Pratham channels. And if you are not a Pratham student, if you are somehow watching from elsewhere, you can reach out to me on Quora. Right? You can reach out to me on Quora. You can put in a comment on this video. I will respond. That's my duty to respond. Okay. So I'll see you and all the best. And please, 2 weeks to go. Kill it in these 2 weeks. Yeah. All the best. Bye bye. Thank you.